you were to stop working, imagine this to yourself. How long can you survive on your remaining savings? What I just asked you was the definition of wealth. Here is a man named Robert Kiyosaki, an American investor, businessman, author, motivational speaker, and financial commentator who became well known in the recent years, who has an estimated net worth of $80 million. Want to know something interesting? Huh? He wasn't raised in a wealthy background. In fact, his family was like most people who worked but didn't have the best financial education and oftentimes struggled with money. So then, how did Robert become rich today? Let's take a look as he explains in one of his bestsellers called Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki was born in Hilo, Hawaii in April 1947. In 1957, at age 9 years old, little Robert was attending the same public school where the rich people sent their children, for his town had lots of doctors, business owners, and bankers. Robert saw that the rich kids would separate themselves from him, for his family wasn't able to afford the newest collections of toys and bikes like them. So, one day, Robert asked his father, who had a PhD and completed multiple universities with excellent degrees, "Dad, can you tell me how to get rich?" Unfortunately, his dad didn't know the right answer because he wasn't rich himself, so he responded with, "Well, use your head, son, stay in school, get good grades, so you could find a safe and secure job." His real dad is what he'll be referred as Poor Dad. He wasn't poor during this time, in fact, he was making lots of money. But in the end, this man's financial life takes a turn for the worst. Now, little Robert has a friend named Mike, in which Mike's father would be referred as Rich Dad, who started mentoring Robert and his son Mike about how to really become rich. At this point in time, Rich Dad wasn't really rich yet, but soon became to be one of the wealthiest men in Hawaii. So then, what did Rich Dad teach Robert? Rich Dad poured a strong financial foundation into these kids' minds of many important principles. To start off, the first lesson you need to know is you must know the difference between an asset and a liability, and that you need to buy assets. If you want to be rich, this is all you really need to know and understand the most. You see, the rich acquire assets, and the poor and middle class acquire liabilities, but sometimes they think they are assets. The primary cause of financial struggle is simply not knowing the difference between an asset and a liability. Oh, right. You don't even know what an asset and a liability is, don't you? An asset is something that puts money in my pocket. A liability is something that takes money out of my pocket. For instance, let's draw a cash flow pattern of a normal individual. This person right here earns his income from a job, and his expenses are things like food, clothes, entertainment, and transportation. Unfortunately, he doesn't have assets, but sure does have liabilities that constantly takes money out of his pocket, because things like mortgages, taxes, credit cards, loans, and believe it or not, the house. Now let's take a look how the cash flow pattern really works for the rich. Instead of looking to earn more money from their normal job as the only source of income, they buy and own assets that brings money into their pockets as a form of passive income. Passive income is something that earns money that doesn't require you to trade your time for it. So in other words, you would be earning money even as you're sleeping. Examples of assets are businesses that doesn't require your presence, stocks, bonds, mutual funds, income generating real estate, royalties, notes, and anything else that has value that produces income. As mentioned before, Poor Dad was making quite a lot of money from his job, but his expenses seemed to always keep up with his income, never allowing him to invest in assets. As a result, his liabilities such as his mortgages and credit card debts grew greater over time, and this is the fault of having income equals expense, and assets is less than liabilities. And sadly, this is what drove Poor Dad into debt even after he passed away. On the other hand,
Rich Dad's personal financial statement reflects the result of a life dedicated to investing and minimizing liabilities. So he has income that is greater than expense because of assets is greater than liabilities. This is practically why the rich are getting richer. Their assets generate more than enough income to cover expenses, with the balance reinvested into the asset column. The asset column continues to grow and therefore the income grows with it. You see, both dads worked hard, but they have opposing attitudes and thoughts. One dad recommended study hard so you can find a good company to work for. The other recommended study hard so you can find a good job to buy. One dad said, the reason I'm not rich is because I have kids. The other said, the reason I must be rich is because I have you kids. One said, when it comes to money, play it safe and don't take risk. The other said, learn to manage your risk. One said, I can't afford that. The other said, how can I afford that? Although both men had tremendous respect for education and learning, they disagreed in what they thought was important to learn. Robert learned from Rich Dad that the truth about the general population, their lives are run forever by two emotions, fear and greed, that keeps him stuck in a pattern of get up, go to work, pay bills, get up, go to work, and pay bills. Fear has him in this trap of working, earning money, working, earning money, and hoping fear will go away of not having money. Instead of confronting the fear, they react emotionally instead of using their heads. The other emotion, which is desire, some call it greed, is a second reason why people also work for money. They desire money for the joy that they think it could buy. But the joy that the money brings is often short-lived and soon needs more money for more joy, more pleasure, more comfort, and more security. You see, that same fear and desire is what makes a lot of people be so fanatical about going to school for a better chance of a high-paying job. But don't be discouraged. An education and a job are important, but it won't exactly handle that fear. To handle that fear, you need to learn the power of money, not be afraid of it. Unfortunately, most schools don't teach about this, and if you don't learn it, you'll become a slave to money. Ignorance of money can cause so much greed and so much fear that can lead you into life's biggest trap of constantly working. Rich Dad said, learn to use your emotions to think, not think with your emotions. Examples of emotional thinking are like, I need to get another job. I deserve a raise. I want this job because it is secured, instead of clearly thinking like, is there something I'm missing here? This is our reality. For most people, your profession is your income. The rich, your assets is your income. Apply these lessons to your life, for if I were to ask you about the definition of your wealth, if you would stop working today, how long can you survive? You might laugh at me and say, I no longer work for money. Money works for me. अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है रिच डैड और पुअर डैड के ऊपर। रिच डैड पुअर डैड मेरे ख्याल से तकरीबन हर बंदे को पढ़नी चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड है, और लोग पढ़ते भी हैं और उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं जो सीखने वाला बंदा है इससे। तो ये तो समझ लें ज़रूर पढ़नी चाहिए, हर बंदे को रेकमेंड करते हैं कि तो इससे जो लर्निंग है हर बंदा अपने हिसाब से अलग अलग निकालता है। तो जो लर्निंग मैंने देखी इसके अंदर, तो जो पॉइंट मैंने अंडरस्टैंड किया वो ये था कि देखें कि दुनिया के 90% लोग, जिस किताब ने जो समझाई बात कि दुनिया के 90% लोग एम्प्लॉयड होते हैं और 10% लोग जो है ना वो बिज़नेस और उसकी तरफ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये 10% लोग जो हैं वो 90% का पैसा अपने पास होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़ा बड़ा अमाउंट जो है वो इनके पास 10% के पास होता है। तो आपको एक रास्ता तो समझ आ गया कि अब आपके पास जाना किधर है, आपने 90% लोगों में जाना है कि 10% लोगों में जाना है। तो ये चीज़ जो है आपको एक डायरेक्शन तो दे देती है सबसे पहले, कि डायरेक्शन मिल गई कि आपने अब जाना किधर है, 90% या 10%। अब वो 10% लोग करते क्या हैं, वो 10% लोग डिफरेंट बिजनेसेस एम्पायर खड़े करते हैं, डिफरेंट अपनी दुकानदारियां बनाते हैं, और इसके अंदर से कोशिश करते हैं कि एक पैसिव इनकम का सिस्टम जनरेट किया जाए। और वो पैसिव इनकम का सिस्टम ये होता है कि जब आप काम ना कर रहे हो तो भी वो पैसा आपके घर में जनरेट हो रहा हो। तो ये वो 10% लोगों की मेजर स्ट्रैटेजी रहती है कि वो ऐसे बिजनेसेस क्रिएट करें जो अल्टीमेटली पैसिव इनकम
इनकम की तरफ उनको ले जाएं, और वो पैसिव इनकम वो ना होते हुए जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट चीज़ों की तरफ, रेंटल साइड पे और साइड पे चले। रेंटल साइड में भी तो यही मामला है ना, आपने तो एक चीज़ ली और उसको कुछ करते नहीं है, लेकिन एक अमाउंट आपके, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट्स में है ना किसी भी तरह से, उसको वक्त निकाल के ये बुक पढ़नी ही चाहिए। वो ये इसको दिमाग को जो ना यकीन करें नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जब भी पाकिस्तानी किसी ग्रुप में इसको डालें ना, तो उसका उर्दू वर्जन डालें। इंग्लिश जो है ना वो कहीं ना कहीं मसले मसाइल पैदा कर देगी उनके लिए। इसको उर्दू वर्जन अगर इसका अवेलेबल हो वो डाले, ताकि वो समझ सकें इसको कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। वो सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा है आपको इन्वेस्टमेंट्स की और लाइबिलिटीज़ की, सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा है आपको कि आपने कौन सा रूट और कौन सी डायरेक्शन पर करनी है। तो माशाल्लाह से ये बहुत बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है। और इन्वेस्टमेंट्स वाले जितने भी कनेक्टेड हैं, इवन के स्टॉक से कनेक्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं, इसको पढ़ें ज़रूर, एक बार वक्त निकाल के इसको पढ़ें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऊपर बात हो रही थी, तो एक रियल एग्जांपल मेरे पास आई कि मेरे एक जानने वाले, उनकी जो वाइफ है उनको एक अजीब सा शौक था कि वो जब भी उनके पास सेविंग आती थी तो वो क्या करती थी, डॉलर मंगवा लेती थी कि डॉलर ले लो डॉलर। तो वो उसको कहता भी था कि तुम कोई बाली वाली कोई अंगूठी हो, इस तरह की चीज़ें जो लेडीज़ का होता है मामला, तो वो ले लिया करो। कहती नहीं, बस डॉलर ले लिया, डॉलर ले लिया, डॉलर ले लिया करो। तो इसी तरीके से हमारे एक और दोस्त हैं, वो जमा करते रहते थे पैसे कि भाई कोई पैसे जमा हो जाए तो मैं प्लॉट ले लूँगा, प्लॉट ले लूँगा। अभी जो रिसेंट हाइक आया डॉलर के अंदर, और डॉलर जो इससे जंप मारता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो अब आप देखें कि वो जो प्लॉट लेने वाला पैसा जो घर में जमा करता रहता था तकिए के अंदर कि हाँ भाई यहाँ पे डब्बे में डालते रहो, जब पैसा हो जाएंगे मैं प्लॉट लेने जाऊँगा। अब जब वो प्लॉट लेने जा रहा है तो वो प्लॉट तो अब उसकी दस्तरस से बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि वो प्लॉट अगर 20 लाख का था तो अब उसको 35 लाख का, 38 लाख का मिल रहा है। लेकिन वो जो डॉलर जमा कर रहा था उसने भी अगर सेम अमाउंट जमा की, लेकिन आज वो अगर करंट रेट के ऊपर जो है वो डॉलर हमारे सामने, तो कम से कम उस प्लॉट की इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल लेगा। जमा दोनों ने रकम सेम की, लेकिन सिर्फ एक डॉलर हाइट की वजह से जो है वो, तो वो उधर निकल गया। तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि देखें, अभी मैं रिसेंटली कहीं बड़ी अच्छी ट्वीट पढ़ रहा था कि देखिए कि कोका कोला के सीईओ ने $50 मिलियन सैलरी ली है, और वॉरेन बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट करके $350 मिलियन कमाए हैं। इन्वेस्टर कोका कोला का $350 मिलियन कमा के निकल गया, सीईओ कोका कोला $50 मिलियन ले रहा है। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। एक बात हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि जो डायनामिक्स हमारे मुल्क के हैं वो हम उसका इम्पैक्ट जो है वो अतराफ़ के ममालिक से उनकी स्टॉक मार्केट या उनके इकोनॉमिक जो भी इनकी कंडीशन है वो सेम ट्रेंड में जो है हम उसको फॉलो करें या उसका सेम इम्पैक्ट हमारी तरफ भी हो। इन्वेस्टर का माइंडसेट और कंट्री के डायनामिक जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या ख्याल है आपका? नोवन भाई, किसी हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है। डिफरेंट ममालिक के अपने डायनामिक्स होते हैं, और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मार्केट के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। मुझे भी कई दोस्त मुझे बजलानी सिंगलानी की पत्नी क्या क्या चीज़ें भेजते रहते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही वाला पॉइंट समझाता हूँ कि हर ममालिक के डायनामिक्स मेच्योरिटी लेवल अलग अलग होता है। लेकिन जो पॉइंट सीखने वाला है वो ये है कि 2+2 4 पाकिस्तान में भी है, 2+2 4 इंडिया में भी है, और 2+2 4 अमेरिका में भी 2+2 4 ही रहेगा। वो कभी भी किसी भी ममालिक में 5 नहीं होगा। हर ममालिक की क्रिकेट के हिसाब से आप देखें पिचेस अलग होती हैं, तो जैसी क्रिकेट आप पाकिस्तान में खेलते हैं वैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सकते। उनके डायनामिक्स अलग है, वहाँ पे जाके आपको उनके हिसाब से मूव ऑन होना होता है। वो जब यहाँ आते हैं तो उनको हिसाब से होना होता है। लेकिन जो बेसिक्स है ना वो कभी भी नहीं बदलती। तो जो बेसिक्स के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, वो टोटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी होंगी उनके ऊपर बेसिक्स वही रहेंगी। तो हम सिर्फ बेसिक्स को उठाते हैं और बेसिक्स पे ही बात कर रहे होते हैं, उसके आगे जो थ्रू आउट आगे वो चल रहे होते हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहे होते। जो बेसिक्स है उनके ऊपर कभी भी कोई किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वो जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल सही है। वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, वो वहाँ पर भी अप्लाई होंगी, वो चाइना में भी जाएंगे तो भी अप्लाई होंगी। बेसिक्स नहीं हिलेंगी, तो हम बेसिक्स पे कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको शेयर्स के हिसाब से देता हूँ। उस वो वॉरेन एक चीज़ कहता है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करें कंपनी में तो इस वजह से नहीं करें कि वो शेयर ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा, ये वाली चीज़ों को देखना। कंपनी को हमेशा बिजनेसेस को इन्वेस्ट करें। बिजनेस आप खरीदते हैं, जब आप किसी के शेयर होल्डर बनते हैं तो आप वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करें। आप ये देखें, ये मत पूछा करें कि भाई ये ऊपर कितना ऊपर जाएगा, या ये 20 रुपये खड़ा हुआ है 25 रुपये जाएगा, या ये 30 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ना करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जिस तरीके से आप अपना बिजनेस ओन कर रहे होते हैं, खड़ा कर रहे होते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। आपने 1000 एफर्ट लिया होता
कुछ टाइम पहले बहुत जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो मैंने फर्टिलाइज़र देखा, मैंने कहा यार मैंने ये 30 रुपये रेट चल रहा है, मैंने फर्टिलाइज़र ख़रीद लिया 1000 शेयर, सिर्फ 30,000 रुपये, 30,000 रुपये मैंने डाले, मैंने बिज़नेस को ओन किया, मुझे फर्टिलाइज़र की ग्रोथ देखी, मुझे दिखा कि आगे पाकिस्तान में जो है फर्टिलाइज़र का स्कोप है, मुझे इसके अंदर 30,000 रुपये डाल देने चाहिए। विद टाइम वो एफर्ट चलते 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 प्राइस भी गेन करता चला गया और मुझे मेरे पैसे भी डिविडेंड की सूरत में देता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जो 30,000 रुपये मैंने दिए हुए थे वो उसने मुझे वापस कर दिए। उसने कहा भाई ये ले जाएं, ये 30,000 रुपये आपने हमें डाला। अब वो शेयर मेरे पास फ्री खड़ा हो गया, लेकिन वो आज भी डिविडेंड देता है। और उसके साथ साथ क्योंकि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ग्रोथ की थी, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली उसकी इन हो गई, वो 40 भी हुआ, 50 भी हुआ, 60 भी हुआ, 70 भी हुआ, 75 भी हुआ। तो ईफर्ट ने मुझे प्राइस भी दे दिया। मुझे 10-15 रुपये के गेन के चक्कर से मैं निकल गया था, 10 रुपये बढ़ गया तो बेच दूँ तो नीचे पकड़ लूँ, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करके बैठा हुआ था। मैंने बात मानी, बात समझी कि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मुझे प्राइस ऊपर नीचे के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। तो वो उसने मेरे पैसे भी मुझे वापस कर दिए, वो शेयर की प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई। तो अब आप देखें वो शेयर फ्री भी खड़ा हुआ है, कैपिटल गेन के हिसाब से 50 रुपये ऊपर भी खड़ा हुआ है और आज भी डिविडेंड दे रहा। तो ये वाला काम कर लें, या फिर आप ये देख लें कि यार टीआरजी में किस रेट पर लूँ, 10 रुपये ऊपर बिक जाए, 5 रुपये ऊपर बिक जाए, या 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखूँ, ये वाला काम कर लूँ। रूट मैंने खुद सेलेक्ट करना है कि मैंने करना क्या।